Hello guys, good afternoon. Welcome to GradeUp, India's largest online education platform. My name is Harshmeet Singh and I welcome you all to this special session जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या हैं इंडिया में कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं, व्हाट आर द स्पेशल राइट्स दैट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गेट, किस लॉ के अंडर ये सब राइट्स हैं और वो प्रोटेक्शन उन्हें कैसे मिलती है। जैसा कि आप लोग को पता होगा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द आईएएस एग्जाम, फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज, फॉर द ईपीएफओ एग्जाम, इन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली यू फाइंड दिस टॉपिक इन द पार्लियामेंट चैप्टर। आप जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते हो उसमें ये टॉपिक आता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कई बार इसको ओवरलुक कर जाते हैं, वी डोंट रियली गेट इन टू द डिटेल ऑफ इट, और यहीं पे हम लोगों से गलती हो जाती है। सो आई विल ट्राई एंड टेल यू कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट में, कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होती हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती हैं, उसको कोई तोड़ेगा तो क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस शॉर्ट लेक्चर। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। गुड आफ्टरनून प्रकाश, रुचि, कृष्णा, निशा, रोशन। आई होप आप सब ठीक हैं, अच्छे से हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। एज ऑलवेज द चैट बॉक्स इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आपके कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में उसको लिखिए। सॉरी, इफ इट इज रेलिवेंट टू द क्लास I will answer all your questions. ठीक है, so शुरुआत करते हैं। What are parliamentary privileges and what exactly do they contain and where are they written? As I said earlier, the parliamentary privileges are certain rights and immunities जो कि members of parliament को मिलती हैं। Once you become member of the parliament, you get certain rights, you get certain immunities. That is because you hold a special government position. आप एक special government position पर हैं and you should get certain extra rights as compared to other citizens. Hello Nivedita, good afternoon. Now parliamentary privileges are defined under Article 105. Same privileges are available at the state level also. Means MPs get certain privileges and MLAs also get the same privileges. For MLAs the privileges are written under Article 194. For the MPs, for members of parliament, they are written under Article 105. Now when these privileges are breached, means if someone goes against these privileges, चाहे वो खुद member of parliament हो और someone from outside, I'll give you examples so that it becomes clear to you आगे जाकर के। but अगर कोई भी ये privilege के against कुछ करता है, if the privilege is breached, तो parliament has the right to take action. This again is a very important point from the exam point of view. Do remember this. Remember that the parliament has the right to take action against a breach of privilege. कोई अगर इस privilege के against जाता है, कुछ immunity के against जाता है, या someone misuses this privilege, parliament उसको punish कर सकता है। Apart from these two articles, rule number 222 in the Lok Sabha rule book and rule number 187 in Rajya Sabha rule book also talk about privileges. Now you don't need to remember these rule numbers. ये rule number आपको नहीं याद करने हैं, because obviously if you start remembering the rule numbers there would be no end to it. वैसे ही आपके पास इतना कुछ याद करने के लिए you anyways have to remember so much. So don't focus on the rule number. Just remember this fact that for Lok Sabha and Rajya Sabha their rule book also talk about privileges. This is what you need to remember. You don't need to remember the rule number. Just remember that the Lok Sabha rule book and the Rajya Sabha rule book, both these rule books also talk about privileges, and the constitution also under Article 105 and Article 194 talk about privileges. So this question can be asked in some other way also. I will give you an example of how a question can be asked. For example, the question can be, which of the following are sources of privileges given to the members of parliament? Which of the following are sources of privileges given to the members of parliament? Options can be 1. Constitution itself. 2nd. Lok Sabha rule book. 3rd. Rajya Sabha rule book. If this kind of a question is asked, the answer is all of them. As we can see, the constitution also talks about privileges of the parliamentarians under Article 105. Lok Sabha rule book also talks about these privileges and Rajya Sabha also talks about these privileges. Yes, Ruchi, the class is bilingual. class bilingual है, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। So याद रखिएगा,
It has to be all of the above. Yes, Nisha Roshan, it is all of the above. So these kind of questions can be asked. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं in the examination. Now there are different kind of privileges that the parliamentarians have. We will discuss privileges one by one. These are individual privileges, means every member of the parliament has this individually. First is the freedom of speech. Freedom of speech का बहुत simple सा मतलब है, in very simple terms, whatever the member of parliament says inside the house, he cannot be taken to the court on the basis of that. हाउस के अंदर इन द लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा में या राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोले ड्यूरिंग देयर स्पीच में वो कुछ भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि उन्होंने स्पीच में ये बोला, या ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर सेइंग दिस इन द स्पीच, दे कैन नॉट बी टेकन टू द कोर्ट. देयर व्यूज कैन नॉट बी टेकन टू द कोर्ट और दे कैन नॉट बी चार्ज फॉर देयर व्यूज एक्सप्रेस इन द पार्लियामेंट. दिस इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच. So whatever they say inside the parliament, they cannot be charged for that. I'll give you an example. For example, as a common man, if I say that I think a Supreme Court justice is not fine, or a Supreme Court justice is corrupt, or they are not giving good decisions, they are giving biased decisions. If I say that as an individual citizen, मेरे against case हो जाएगा. I will be held for contempt of court. On the other hand, if the parliament is discussing the removal of judges, पार्लियामेंट डिस्कस कर रहा है कि हमें जजेस को हटाना है, एंड ड्यूरिंग दैट दे डिस्कस दैट द जज इज करप्ट और ही इज नॉट गिविंग गुड डिसीजंस, देन ही पार्लियामेंटेरियन के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा. नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो वट एवर ही सेज इन साइड द हाउस इज प्रोटेक्टेड बाय हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट. देन फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. नाउ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट पे क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड दे गेट कंफ्यूजिंग एट टाइम्स. You have to remember that president has a different immunity. Members of parliament have a different kind of immunity. So we will discuss first what is the immunity that the members of parliament get in case of arrest. So there are two types of cases. There can be criminal cases and there can be civil cases. So for criminal cases, members of parliament have no immunity. Means if the members of parliament commit a crime, they will be charged in the similar manner as anyone else is charged. जैसे किसी और पे केस चलता है वैसे ही इन पे भी केस चलेगा if there is a criminal charge. But if there is a civil charge as in related to money, for example their check has bounced or they have not undermined or they have not followed a contract that they have signed. In case of a civil offense, they will not be arrested during the session of the parliament, 40 days after the session of the parliament, and 40 days before the session of the parliament. During this time they cannot be arrested. But remember, cannot be arrested for civil crimes. For criminal activity they will be arrested जैसा normal होता है, but for civil नहीं. राशु सॉरी यार, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा. इफ यू अटेंड क्लासेस ऑन ग्रेडअप ऐप, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा. यूट्यूब सेशन के आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगे. आई एम सॉरी. सो व्हाट देयर इम्यूनिटी इज, किसी भी सिविल ऑफेंस में दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन. ड्यूरिंग द सेशन उनको नहीं अरेस्ट किया जा सकता. सेशन के 40 डेज बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सेशन से 40 डेज पहले भी दे कैन नॉट बी अरेस्टेड. दिस इज फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. रिमेंबर दिस पार्ट. So it also means that they cannot be forced to be a witness in a case during the session of parliament. मतलब अगर उनका खुद का केस नहीं है but they are a witness in a case, उन्हें कोर्ट जाना था, the court had called them that you should come be a witness, आपको कोई ना कोई गवाही देनी थी. For that also members of parliament cannot be forced to be a witness in a case during the session of the parliament. पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होगा, ड्यूरिंग द सेशन दे कैन नॉट बी फोर्स टू बी अ विटनेस. अगेन मैं रिपीट करता हूं, लेट मी रिपीट. फॉर देयर ओन केस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल इम्यूनिटी, बट फॉर सिविल केसेस दे हैव इम्यूनिटी. क्या इम्यूनिटी है? दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. सेशन से 40 डेज पहले और 40 डेज बाद दे कैन नॉट बी अरेस्टेड. बट इफ इन सम अदर केस दे आर अ विटनेस इन सम अदर केस, उस केस में दे कैन नॉट बी फोर्स टू कम टू द कोर्ट टू बी अ विटनेस, बट ओनली ड्यूरिंग द सेशन. जब तक सेशन चल रहा होगा तब तक
they may say that I will not come to the court. Then there are some collective privileges, मतलब जो parliament as a house उनकी कुछ privileges हैं. As a house there are some things that the parliament can do. First, they can decide if a certain thing will not be published about their proceedings. Usually क्या होता है कि whatever the parliament discusses, parliament जो भी discuss करता है, the newspaper, the media, they have the right to report it. वो उसको report कर सकते हैं, they can write in the newspaper. However, if the parliament thinks, अगर parliament को ऐसा लगता है that there is a very important topic that we are discussing, एक बहुत important topic है जो हम discuss कर रहे हैं, they can decide that media will not publish this. So they can stop the media from publishing certain matters discussed in the parliament. Yes, Nisha Roshan, they can be arrested after 40 days in case of civil offense. 40 days के बाद उनको अरेस्ट किया जा सकता है. So parliament usually ऐसा नहीं करता है, but they can still stop the press from publishing information about the parliament if they think कि बहुत important matter discuss हो रहा है. If anyone violates this rule, if any media house violates this rule, any newspaper publishes this, any news channel shows this kind of information, then there can be punishment under the law of the parliament. Parliament can punish if someone does not accept this, और अभी भी वो अगर news में छाप रहे हैं what the parliament does not want them to publish. Then the parliament has the right to exclude strangers. I don't know if you know this or not, but जो parliament house है in Delhi, you can actually go and sit in the parliament. आप ऊपर balcony होती है, in the balcony the common people can go and sit in the parliament. You have the right to see the proceedings of the parliament. As an audience, you can sit there. However, if the parliament thinks कि यहाँ पे बहुत important चीज कुछ discuss हो रही है, and हम लोग बाहर के लोगों को नहीं दिखा सकते ये, parliament can make a rule that for some meetings, outsiders will now be allowed. Outsiders will not be allowed for some meetings if the parliament wants. So parliament can exclude the strangers from a meeting. Members or visitors, they can exclude them. They will not be allowed to come and sit in the galleries for that time period. It again is a right that the parliament has. The parliament also has a right to punish its own members as well as outsiders for breach of privilege. अगर इस privilege immunity against कोई कुछ करता है, parliament has a right to punish them. चाहे वो members of parliament हो चाहे बाहर वाले हो. For example, let's say parliament ने law बनाया that today जो भी आज discussion हो रहा है, for this discussion no news media can publish anything जो भी आज parliament में हुआ. But even then किसी news media ने newspaper ने publish कर दिया, they publish what is being discussed in the parliament. In that case, parliament has the right to give them the punishment. Parliament उनको punish कर सकता है. On the other hand, parliament can punish its own members also. Parliament अपने खुद के members को भी punish कर सकता है. कैसे? If the parliament thinks कि someone of his own member, उनका कोई खुद का member misuse कर रहा है privilege को, then उनको भी action लिया जा सकता है. Again, same action can be taken. When a member of the house is involved in parliamentary misbehavior and commits a contempt, he can be expelled from the house. I'll give you an example. For example, आज parliament ने decision लिया. Today the parliament said, for today no stranger will be allowed. आज कोई भी gallery में allowed नहीं होगा, because we are discussing very important matters. Let's assume दिन खत्म हुआ. At the end of the day, one of the members of parliament, he went outside. उन्होंने अपने WhatsApp पे सबको लिख दिया, पता है पार्लियामेंट में क्या डिस्कस हुआ, I will tell everyone. So if this happens, if a member of parliament discusses information outside the house which was not supposed to be discussed, अगर ऐसा कोई डिस्कस करते हैं, तो against that member of parliament, the parliament can take an action. Parliament अपने उस member of parliament को हटा सकते हैं from the house. He can be expelled from the house because of breach of privilege. तो breach of privilege की जो सजा है, the punishment is not just for outsiders, केवल outsiders के लिए नहीं, members of parliament को भी उसकी सजा मिल सकती है. The parliament can do that. Then parliament has the right to regulate the internal affairs of the house. मतलब members of parliament खुद decide करेंगे house कैसे चलेगा.
members of parliament can say whatever they want in the house. Within the house, parliament के अंदर, in Lok Sabha, in Rajya Sabha, in both of them, members of parliament are free. They can say whatever they want. You cannot punish them for that. उसके लिए आप उन्हें punish नहीं कर सकते हो. And they have the right to speak their mind. उनको केवल अपने मन से जो चीजें हैं वो बोलने के लिए you cannot hold them guilty. For example, let's say that in a debate in the parliament, a member of parliament says something which is against India. He says that India is very weak, or we will lose a war against China, or India is this or that. Even then you cannot take any action against him. Usually in many cases if a normal citizen says these things, कोई normal citizen ऐसी चीजें बोलेगा तो you can take action against him, but not members of the parliament. ठीक है, so ये भी members of the parliament के पास right है. Guys, just one request, if you have not liked the video till now, please like the video, share it with your friends, and also subscribe to this channel so that you can watch more such videos. Now parliament में, in the parliament, in both the houses, in Lok Sabha also and in Rajya Sabha also, दोनों house में there is something called privilege committee. So privilege committee होती है in Lok Sabha also, in Rajya Sabha also. What does this committee do? ये committee क्या करती है? In very simple terms, if the house thinks कि किसी के against हमें action लेना है, if the house thinks we have to take action against a specific member or an outsider for a breach of privilege, किसी outsider ने privilege के against कुछ किया हो, या inside the house a member of parliament has committed a breach of privilege, उनके against कुछ action लेना है अगर, this committee decides what the matter is. This committee decides what action is to be taken. So in other words, the parliamentary committee decides if a certain action has to be taken for a breach of privilege. ये भी important है आपकी examination के लिए, IAS के लिए भी, EPFO के लिए भी, state civil services के लिए भी, it is important. You must remember how many members are there in the committee. In the privilege committee of Lok Sabha, there are 15 members. Remember, Lok Sabha की privilege committee में there are 15 members. As per the party strength. As per the party strength का मतलब क्या हुआ? Meaning that if 50% of Lok Sabha seats are with the BJP, then in this committee 50% members would be of the BJP. If 10% seats in the parliament or in the Lok Sabha are with BSP, then BSP will get 10% members in this committee also. So that is what it means. 15 मेंबर की कमेटी होगी और जैसी जैसी पार्टी की स्ट्रेंथ है इन द लोकसभा वैसे वैसे उन्हें मेंबर्स यहाँ पे मिलेंगे. द स्पीकर कैन अलाउ हाफ एन आवर डिबेट फॉर द कमिटी. इस कमिटी में डिबेट होती है. द कमिटी डिसाइड्स इफ वी वांट टू टेक एक्शन और नॉट, क्या हमें किसी अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए या नहीं इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. क्या कोई प्रिविलेज के अगेंस्ट जाता है, इम्यूनिटी के अगेंस्ट जाता है, तो क्या हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं. द स्पीकर कैन परमिट 30 मिनट्स डिबेट. ठीक है. राज्यसभा ऑल्सो हैज दिस कमिटी. रिमेंबर, राज्यसभा में दिस कमिटी हैज 10 मेंबर्स. याद रखना, राज्यसभा में दिस कमिटी हैज 10 मेंबर्स. लोकसभा में कितना था? 15 मेंबर्स. राज्यसभा में 10 मेंबर्स. समीर, जैसे मैंने आपको पहले बताया शुरुआत में भी, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम वेरियस काइंड. एक क्वेश्चन ये हो सकता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द प्रिविलेज कमिटी. फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि डू बोथ द हाउसेज हैव डिफरेंट प्रिविलेज कमिटी, या दोनों की एक है. तो आंसर इज दोनों की अलग अलग प्रिविलेज कमिटीज हैं. देन द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव सिविल इम्यूनिटी और क्रिमिनल इम्यूनिटी. वो हमने डिस्कस किया, दे डोंट हैव क्रिमिनल इम्यूनिटी. ऑन द फर्स्ट पेज आई डिस्कस्ड. एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस. प्रिविलेज मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये कहाँ लिखा है? वी हैड डिस्कस्ड, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक ऑफ लोकसभा, रूल बुक ऑफ राज्यसभा. सो ये सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से. देन व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स स्पीकर इन केस ऑफ द लोकसभा या चेयरपर्सन इन केस ऑफ द राज्यसभा. What is their role? See, whenever a privilege motion is moved against a member, so whenever the members of parliament think कि कोई एक member है हमारा जिसने privilege का misuse किया है, we have to take action against him.
that action starts only after the speaker allows in the Lok Sabha, or in the Rajya Sabha, the chairperson has to allow it first. So for any action to be taken against a member of parliament for breach of privilege, that can only be taken if the speaker or the chairperson decide on the privilege motion. He decides whether a action is to be taken or not. Then he gives the matter to the privilege committee. Privilege committee को बोला जाता है आप बताइए क्या एक्शन लेना है कि नहीं. The speaker or the chairperson has to give his permission, and after his permission जिस member पे कार्रवाई हो रही है, the member of parliament against whom this action is being taken, he can also make a short statement. So member of parliament is allowed to make a short statement defending himself. Member of parliament खुद को defend कर सकते हैं. He can say मैंने ऐसा किया था, या मेरा मतलब ये नहीं था, या भाई नहीं है क्या, प्लीज छोड़ दे. So the member of parliament can defend himself if the presiding officer allows him to. This is everything that you need to know about the privilege motion and the action taken against the member, and how it works, and what are the privilege committees in the parliament. If you have not downloaded the GradeUp app, please download the GradeUp app. There are a lot of practice questions, quizzes, and live classes that help you prepare for your dream examination. Thank you so much for watching, guys. If you have any question, please leave it in the comment section. Our team will answer them. Thank you so much for watching. Bye. Have a good day.